Namaste, Namaste. Welcome to Courtroom. This is a series of lectures on the most important Supreme Court judgments from which questions can be asked in your examination, whether it's pre, whether it's mains, whether it's UPSC, whether it's CLAT PG, whether it's an exam such as DU LLB. This is useful for pretty much all examinations. Specifically for exams, these are not general purpose discussions on judgments. Now, electorals appeals case. The formal name is Abhiram Singh versus CD Commachen. First question that they usually ask is, which of the following is known as electoral appeals case? So that is Abhiram Singh versus CD Commachen. This was a 7-judge bench. 4 judges gave one judgment, as in the interpretation was on the one side, and 3 judges dissented. So it was a 4:3 verdict. Now, the entire case law is hinged on Section 123, Subsection 3 of the Representation of the People Act 1951. This is another MCQ, year 1951. When was it enacted? So this is 1951. Since it's Section 123, now this is also a very popular MCQ. You go through any judiciary prelims past years, you will find they're asking what does Section 123 contain, or corrupt practices contain, or corrupt practices are contained where or mentioned in which section of the Representation of the People Act. That's Section 123. So this becomes a cardinal section. A very important, another 123 is very important, is the Evidence Act, based on the Maxim Salus Populi. Judiciary guys will know what I'm talking about. And then Article 123 is all about ordinances, that is the legislative power of the president. Whenever you are preparing for any law entrance exam, especially the higher ones, you need to be connected कि सारे के सारे 123 के आसपास कहाँ पे क्या घूम रहा है. Alright, अच्छा, ये भी पूछा गया है कि Part 7, so where is Section 123, corrupt practices are given under which part of the Representation of the People Act? So that's Part 7, corrupt practices and electoral offences. Now we go specifically, I'm not going to go into the entire section, specifically to 123 subsection 3, और इसके ऊपर सारी कहानी एक शब्द पे टिकी है, which is his, HIS के ऊपर टिकी. So let us read the section out. The appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion, race, caste, community or language or the use of. अब यहाँ पे सारी कहानी पूछ ली गई, भैया ये his, ये कैंडिडेट को रेफर कर रहा है या कैंडिडेट या वोटर बोथ को रेफर कर रहा है? सो कैन यू एक्चुअली अपील टू अ वोटर्स रिलीजन और इवन योर ओन रिलीजन की जी मैं स्पेसिफिक रिलीजन से हूं इसीलिए आप मुझे वोट दीजिए, नहीं की वर्सेस आप इस रिलीजन से हैं और मैं भी आपके रिलीजन से हूं इसलिए कृपया करके मुझे वोट दीजिए. तो ये जो हिज है, हिज के इंटरप्रिटेशन के ऊपर ये सारा का सारा केस लॉ टिका हुआ है आपका. अब जरा देखते हैं यहाँ पे मोटा माटी लमसम कहानी क्या है. तो एक्चुअली 2 केस लॉज के बारे में यहाँ पे, अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कोमाचन केस नंबर 1, नारायण सिंह वर्सेस सुंदरलाल आपका जी ये पटवा. तो ये यहाँ पे क्या हो रहा था कि जी कोमाचन वाले केस में इलेक्शन ऑफ अभिराम सिंह was successfully challenged by Commachen ji, and Abhiram Singh का जो he was basically challenged कि जी आपने you are asking your candidature basically to be elected on the basis of Hindu votes. वो कह रहे थे जी मैं हिंदू हूँ, आप हिंदू हैं, आइए जी मेरे को वोट करिए क्योंकि हमें तो भाई भाइयों के साथ रहना है. वो कहता है जी ये सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 के खिलाफ है. So this was successfully challenged in the High Court. It was an election petition, but this was appealed in the Supreme Court. तो वहां पे क्वेश्चन लगा ये जो his जो शब्द है 123 subsection 3 में, does it include only the candidate's religion or does it include the voter's candidate religion only or does it include both? That is the entire core crux. Similarly यहाँ पर भी जो दूसरे वाले जो केस में भी यही रफली कहानी थी, बट इसके ऊपर पहले अभिराम जी वाले पर बात कर लेते हैं. तो कोमाचन जी ने सक्सेसफुली इनको ब्लॉक आउट कर दिया इनकी जो इलेक्शन थी, and he appealed to the Supreme Court. The 3-judge bench said that this matter should be heard by the 5-judge bench. नारायण सिंह वर्सेस सुंदरलाल पटवा के अंदर क्या हो रहा था कि जी इलेक्शन ऑफ पटवा वो चैलेंज की जी इन्होंने फिर अगेन अपील टू बी वोटेड फॉर हिम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन करी है. तो इलेक्शन पिटिशन लगाई गई हाई कोर्ट. अच्छा, इलेक्शन पिटिशन कहाँ पे, इलेक्शन पिटिशन सुन कौन सकता है? इलेक्शन ट्राइब्यूनल नहीं, सिर्फ केवल और केवल एक ही जुडिशियल बॉडी, दैट इज द हाई कोर्ट. सेक्शन 80 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये दे रखा. And then this election petition was dismissed. So an appeal was
basically filed to the Supreme Court, and a 5-judge bench said that well this is quite a big constitutional law matter कि जी ये interpretation का मामला है, तो कृपया करके इसको जरा 7-judge bench पे आप डाल दीजिए. So they tagged it along with Abhiram Singh was CD Commachen, and this became the popular case law name. Again ये जो pronoun है his, इसके ऊपर लड़ाई है, ये his किसको रेफर कर रहा है. ठीक है जी. अच्छा, so they also gave examples in this that I am a Hindu so vote for me. कैंडिडेट ये कह रहा है कि जी मैं हिंदू हूं, आप मुझे वोट करें. मेरा जो अपोनेंट है जो चुनाव में जो खड़ा हुआ है वो मुस्लिम है, आप कृपया करके इसीलिए उसको वोट ना करें क्योंकि आप हिंदू हैं. या इस सिनेरियो को आप रिवर्स कर लीजिए कि जी आई एम अ मुस्लिम सो यू वोट फॉर मी, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई. या सामने वाला हिंदू है देखो भाइयों, उसको नहीं वोट करना, वाइस वर्सा. तो ये माय अपोनेंट इज अ मुस्लिम, डू नॉट वोट बिकॉज वेल वी आर हिंदू सो डू नॉट वोट फॉर द मुस्लिम. या मुस्लिम अगर कैंडिडेट होगा तो वो रिवर्स कर देगा. तो यहाँ पे बेसिकली ये जो सारी की सारी जो लड़ाई, सो दिस इज ऑलमोस्ट अ नेगेटिव अपील टू वोटर ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिलीजन. अब 4:3 की वर्डिक्ट में इन्होंने कह दिया जी, 4 वालों ने कह दिया, जो बेसिकली जो आपका जो मेजोरिटी जो काम कर रहे हैं, मेजोरिटी जजेस ने कह दिया कि हिज इंक्लूड्स, हिज रेफर्स टू कैंडिडेट एंड बोथ द वोटर्स. तो ये आपको ऐसे इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि जी ये जो हिज है, ना तो कैंडिडेट अपने रिलीजन के लिए अपील उठा सकता है कि जी मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, ऐसा मतलब आप इस बेसिस पे वोट नहीं उठा सकते. या आप ये भी नहीं कह सकते कि भैया तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो इसलिए फलाना ढमकाना वोट करो. नाउ दीज आर मेयर एग्जांपल्स, ऑलराइट. तो यहाँ पे 3 जजों ने डिसेंट कर दिया, चंद्रचूड़, गोयल और ललित जी ने. जस्टिस चंद्रचूड़, गोयल और ललित जी ने डिसेंट कर दिया. ठीक है जी. तो जो मेजोरिटी लोगों ने कहा कि भैया ये वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 is about purposive reading that all actors involved in the proceeding, in this proceeding, all actors, the candidate, the voter, candidate's agent, anyone who raises or asks for votes in the name of religion, या जो बेसिकली वहां पे ग्राउंड्स जो सारे के सारे स्पेसिफाई करे हुए सेक्शन 123 के सबसेक्शन 3 के अंदर, that will constitute as a corrupt practice, and therefore election your, even if you won the election there will be problems there. But 3 जजों ने डिसेंट करा, और जैसे चंद्रचूड़ ने एक्चुअली एक केस स्टेटमेंट भी दी थी that this, if we allow this will reduce democracy to an abstraction. This is popularly asked in CLAT PG, CLAT LLM का even past year भी आपको मिल जाएगा, that in which case law was it said by or observed by Justice Chandrachud. This is Abhiram Singh versus CD Commachen. एंड यहाँ पे जो इन्होंने काम करा था कि जी अगर हमने ऐसे अपील, इवन दो दे सेड सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, right? This was mentioned in Keshwanand Bharati, reconfirmed and clarified again in SR Bomai as well. But यहाँ पे if we prohibit the appeals on the basis of religion, race, caste, sex and language, it may just constitute a violation of Article 19 Clause 1 Subclause A. Alright, ठीक है जी. तो यहाँ पे इन्होंने डिसेंटिंग वाली जो जनता है उन्होंने कहा दिस इज कैंडिडेट ओनली, नॉट वोटर्स. यू कैन अपील, दे से वी कैन नॉट ignore the past, we cannot ignore the inequalities of the past, etc. We won't go into all of those philosophical debates. Alright, अच्छा, तो यहाँ पे अब 2 MCQ और आगे निकल सकते हैं. तो इसका एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन इज क्वाइट टेढ़ा, इंटरनेट पे बहुत सारी अलग अलग pronunciation है, but I will go as per the Latin pronunciation. So this is one funda that was used in this case. This is noscitur a soci. वो कह लीजिए क्या बोल दिया आपने, लैटिन में ऐसी कुछ प्रोनाउंसिएशन होगी, या अगर इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें तो नॉसिटूर, नॉसिटर, आ सॉसेस ऐसे करके होगा. बट खैर दिस की टर्म आई वुड रीड इट इन लैटिन इज नॉस्किटूर आ सोची, बिकॉज दैट्स हाउ pretty much Latin works. Any which way, I can still be incorrect. Now this is a doctrine or rule of construction, the meaning of an unclear or ambiguous word. So this is a rule of construction, means this is how you interpret words in law. The meaning of an unclear or ambiguous word should be determined by considering the words with which it is associated in the context. So for example, let us say a judge says 164, 164 में जो बयान दिया गया, you automatically know 164, 164 is CRPC के बारे में बात हो रही. We do not even need to mention the law. 164 में बयान और कहाँ होगा, right? 482 में FIR को वॉश करो, that's again CRPC. या 32 में रेट लगाओ, that's Article 32, the Constitution. Meaning of an unclear or ambiguous word should be determined by considering the words with which it is associated in the context. So his जो यहाँ पे जो शब्द है
The 4 judges, in their majority opinion, they construed it within the context and came to a conclusion that this includes both a candidate and a voter. Now there is another funda, similar, very another, you can say another rule of construction, very similar funda. A use them generis, वो कह रहे जी Latin में journey होता, so A use them generis or literally of the same kind or class. So for example, let us say in a section it is said investment, let us say in an income tax act it is मतलब एग्जाम्पल के तौर पे इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है. अब इन्वेस्टमेंट लिखा है, सो इट मे जस्ट मीन यू नो शेयर, सिक्योरिटी, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड. That's assumed generis, that is of the same kind, is a long-standing principle of both contract and statutory interpretation. It provides that where a general word or phrase follows a list of specific terms, the general word will be interpreted to include only items of a similar nature to the terms specified. ताकि वकील साहब ये ना लगे लेकिन सर इन्वेस्टमेंट का मतलब तो ये भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब तो वो भी हो सकता है. So these are 2 rules of construction. The first one is ये वाले भैया, we won't go into funny pronunciations again. Use them generis, and that's it. Electoral appeal case. तो सेक्शन नंबर याद रखिए, सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 पे सारी लड़ाई हो रही थी. केस का नाम is important, and these are pretty much all the relevant questions that the examiner can cook up from this case. All right, wishing you all the very best. Take care, and again prepare well for your desired exam. Take care. Bye.